Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 9, areas of parallelograms and triangles. So, as you know very well about what are the parallelograms and triangles. So, parallelograms are quadrilaterals whose opposite sides are equal and parallel. Okay, so you know very well about triangles. Triangle, three-sided figure is known as a triangle. Okay, so triangle have three vertices, three angles and three sides. Okay, so now we will discuss about the areas of parallelogram and triangles. So in chapter number 7, triangles, we already discussed about congruence of triangles. So two figures are called congruent if they have same shape and same size. Okay, so for example, we have this figure. These both are the quadrilaterals. When we say these quadrilaterals are congruent if they have same shape and same sides, means if all sides are equal and all angles are equal, then we say that these figures are congruent. Okay, also remember that if two figures are congruent, they must have equal areas. ठीक है, अगर सपोज ये दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका क्या मतलब है कि इनका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, इक्वल. Clear? But converse is not true. Okay, so it is not possible if two figures have equal area then they are congruent. It is not true. ठीक है, तो क्या है कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये पक्का है कि उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल. बट अगर दो फिगर्स का एरिया इक्वल है तो वो ज़रूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगी. सो रिमेंबर इट. Now we will discuss about figures on the same base and between the same parallels. Okay, so as you see in the figure 9.4, this one, this is a trapezium ABCD and parallelogram EFCD. These two figures have common side, that is DC. Okay, so we can say that trapezium ABCD and parallelogram EFCD are on the same base DC. Okay, because both have same or you can say that common side. Clear? So similarly in the second figure, parallelogram PQRS and MNRS are on the same base, that is SR. Clear? Similarly in the third figure, triangle ABC, this one triangle, and BDC, this one triangle, are on the same base, that is BC. And in the fourth figure, parallelogram ABCD and triangle PCD, both are on the same base, that is DC. Clear? But now look at these figures. You see that in the first figure, trapezium ABCD and parallelogram EFCD are on the same base, that is DC. Okay, so it is clear that these two figures are on the same base, that is DC. But one thing is more, that vertices A and B opposite to the base DC and vertices EF opposite to the base DC. ठीक है, so these are on the line AF parallel to DC. ठीक है, इस फिगर में हमने क्या नोट किया है कि दो फिगर्स हैं,
ए बी सी डी, सेकेंड ई एफ सी डी, ठीक है, दोनों सेम बेस पे लाई कर रही हैं डी सी पे, ठीक है। इसके अलावा हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं कि जो वर्टिसेस ए बी है ट्रेपेजियम ए बी सी डी के, एंड जो हमारे पास वर्टिसेस ई एफ हैं वो क्या है, ऑपोजिट टू द बेस डी सी, ठीक है। तो अगर हम ये वाली ले रहे हैं पैरेललोग्राम, तो जो ई एफ वर्टिसेस हैं वो किसके ऑपोजिट है, डी सी साइड के, क्लियर। तो ये किस में लाई कर रहे हैं, देखो ए एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के, क्लियर। सो वी कैन से दैट trapezium ABCD and parallelogram EFCD, these are on the same base and between the same parallels. Okay, so as you see in this figure, ABCD and EFCD, this is the trapezium and this is the parallelogram, both are on the same base but not in between the same parallels. But in this figure both are on the same base and between the same parallels, clear. So let us take the next example. For example, parallelogram PQRS, PQRS, and second one is MNRS. So you see that both are on the same base, that is SR, and between the same parallels, ठीक है। For example, PQ is vertices PQ is opposite to the SR, and MN and both are opposite to SR. So these two figures are between the same parallels and on the same base, clear. So in the next one, in the third figure, triangle ABC and DBC lie on the same base BC and between the same parallel AD and BC, clear. So next one also, parallelogram ABCD and triangle DPC are on the same base and between the same parallels, that is AP and DC, clear. Okay, next we start our first theorem, that is parallelograms on the same base and between same parallels are equal in area. So this theorem is very important. What we have to prove in this theorem, if we have two parallelograms that is on the same base and between the same parallels, then they have equal areas. So first of all, let us draw the figure. So we have two parallelogram. First one is A, B, C, D, and second one is E, F, C, D. So these two parallelograms have same base, that is DC, and these two parallelograms are between the same lies between the same parallels, that is EF and DC. Okay, so now we have to prove that these parallelograms have equal area. So let us prove. So first of all, we will write that what is given to us. Okay, so this theorem is very important. So revise this theorem carefully. First of all, what is given? We have given that two parallelograms. This is a short form of parallelogram, okay, double LGM. It means parallelogram. So two parallelograms A, B, C, D and E, F, C, D, okay, on the, दोनों क्या हैं, सेम बेस पे हैं, on the same base DC and between same पैरेलल्स, सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स में हैं, ठीक है, दैट इज AF एंड DC आर गिवन. ओके, सो दिस इज गिवन. नाउ वी विल राइट टू प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू
prove. We have to prove that area of ABCD is equal to the area of EFCD. Clear? So now let us prove. Now we will prove. So first of all, I take two triangles, that is ADE and BCF. I take this one triangle, okay, and this one triangle. So I take these two triangles. First of all, I prove that these two triangles are congruent, okay. First of all, I prove that these two triangles are congruent. Then I write that if these two triangles are congruent, they have equal areas. Okay. So let us prove. In triangle ADE and triangle BCF. Okay. So everyone knows about that angle DAE is equal to angle CBF. Angle DAE means this one angle, okay, and CBF, this one angle. These two angles are equal. Why? Because AD is parallel to BC. When we take parallelogram ABCD, then AD line is parallel to BC and transversal line, that is AF. So these are the corresponding angle. Corresponding angles. So corresponding angles from AD parallel to BC and transversal AF. Okay. So we know that when two parallel lines cut by transversal line, then this angle is equal to this angle, because both angles are corresponding angles. Similarly, AED, this one angle, and BFC, this one angle, both are equal. AED is equal to BFC because corresponding angles DE parallel to FC. Now this line is parallel to this line, and transversal AF. Transversal AF. Okay. Now we need only third property, थर्ड कंडीशन. ठीक है, दो कंडीशन तो हमारे पास होगी एंगल वाली. अब हमें क्या चाहिए? थर्ड कंडीशन. ओके, अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ये भी एंगल क्या होगा? इस एंगल के इक्वल. देखो, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो एंगल, देयरफॉर एंगल ADE is equal to angle BCF by using angle sum property. Means sum of all angles of triangle is 180 degree of a triangle. Okay. Also we know that AD is equal to BC. Side AD is equal to BC because of the opposite sides of parallelogram, because these two are the opposite sides of parallelogram, and we know that opposite sides of parallelogram are equal. Okay, so by angle side angle, angle side angle, angle side angle,
Okay, so by using angle side angle rule, triangle ADE is congruent to triangle BFC. Clear? So these two triangles are equal, congruent. So if these two triangles are congruent, we know that their areas are also equal. So two triangles are congruent, then area of triangle ADE is equal to the area of triangle BFC. ओके, अगर इनका ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल. सो वी राइट द रीजन दैट कॉन्ग्रुएंट figures have equal areas. Okay, so congruent figures have equal area. So now we take ABCD parallelogram. So area of parallelogram, now area of parallelogram ABCD is equal to the area of this figure and area of this figure. अगर हमने देखो हमने क्या करना है, ABCD का एरिया लिखना है, तो हम ये वाली चीज़ नहीं लेंगे. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम किसके एरिया को मिला के बनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE and area of this quadrilateral EDCB. Okay, so we write it area of AED triangle and plus area of EBCD quadrilateral. Okay, so also area of triangle AED is equal to area of triangle BFC. Let us take this equation B1. Okay, so area we can write, हम लिख सकते हैं ना इसकी जगह पे ये वाली चीज़, क्योंकि अभी हमने लिखा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल. तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल BFC इज प्लस एरिया EBCD. ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गया, EBCD एंड ट्रायंगल कौन सी आ गई, BFC. तो अब इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन गई, पैरेललोग्राम EFCD. एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू द पैरेललोग्राम एरिया EFCD. सो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो पैरेललोग्राम्स सेम बेस और सेम बिटवीन द सेम पैरेलल्स में बनती हैं उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज ABCD is a parallelogram. ABCD is given that this is a parallelogram and EFCD is also a rectangle. Okay, ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle which is also a parallelogram. Okay, so also it is given that AL is perpendicular to DC. Prove that area of ABCD is equal to the area EFCD. Clear? So first of all we prove that the area of these two parallelograms are equal. Okay, so first of all, as you know that EFCD is also a parallelogram. So by using theorem first, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम पैरेलल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस पे बन रही हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल. तो अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, फर्स्ट वन इज ABCD एंड सेकेंड वन इज EFCD. तो दोनों क्या बन रही हैं, ये देखो दोनों का बेस क्या है, DC,
और सेम पैरेलल्स के बीच में बन रही है, दैट इज EB एंड DC। तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, थ्योरम 1 दैट two parallelograms are between the same parallels and on the same base, so that's why they have equal area. Clear? Second part is area of ABCD is equal to DC into AL. ठीक है, तो अब हमने ये प्रूफ करना है। सो एज यू नो दैट एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, देखो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFCD, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ क्या बन रही है, DC इनटू ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, FC। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFCD। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव किया है कि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन राइट इट इक्वल एंड एरिया ऑफ EFCD हमारे पास क्या है, DC इंटू FC, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ABCD क्या आ गया, DC इंटू FC। सो ऑल्सो as AL is perpendicular to DC, AL is perpendicular to DC, so therefore AFCL is also a rectangle. Okay, AFCL, this one is also a rectangle. So AL is equal to FC। तो हमारे पास क्या आ गया, AL किसके इक्वल हो गया, FC के। तो यहाँ पे हम FC की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, AL। सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL। तो यही हमने प्रूव करना था। क्लियर? Next is, if a triangle and parallelogram are on the same base and between the same parallels, then prove that area of triangle is equal to the half of area of parallelogram. So you have to remember this rule. This rule is used in many questions. तो ये आपका जो रूल है इसको हमने ये एज एग्जाम्पल नहीं लेनी। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चंस। ओके, कई क्वेश्चंस में ये वाला रूल अप्लाई होगा, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। क्लियर? इसमें क्या है कि हमने प्रूफ करना है कि अगर एक ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम है, दोनों सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स में है, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का half. Clear? Now we will prove it. Okay, so let's start our solution. So we draw the figure. As you see that A, B, C, D, this is a parallelogram, and A, B, P is a triangle that is on the same base, that is AB, and between the same parallels AB and PC. Okay, so first of all we write what is given. Given is, let triangle ABP and parallelogram ABCD be on the same base and between same parallels. Base is AB and parallels AB and PC.
Okay, now to prove what we have to prove that area of triangle PAB is equal to the half area ABCD. Okay, so we have to prove it and let us construction. यहाँ पे एक हम construction करेंगे, ठीक है. So construction is draw BQ parallel to AP. BQ पैरेलल टू AP. AP के पैरेलल हम एक BQ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, टू ऑब्टेन द अनदर पैरेललोग्राम. टू ऑब्टेन अनदर पैरेललोग्राम ABQP. Okay, so now the parallelogram ABQP and ABCD are on the same base, that is AB, and between the same parallels AB and PC. Okay, so there now we will prove we have two parallelograms. Two parallelograms are ABCD and ABQP are on the same base and between same parallels. So therefore area of these two parallelograms are equal by the theorem. Okay, so area of ABCD is equal to the area of ABQP. Okay, now we take two triangles. In triangle PAB and triangle BQP. PAB, this one triangle, and triangle BQP, this one triangle. Okay, we prove that these two triangles are congruent. Okay, so as you see, PA and QB are both parallel lines. PA parallel to QB. Okay, PA is parallel to QB and this is the transversal line and transversal line PB. So as you know that when transversal line cut two parallel lines, this angle and this angle both are equal because of alternate interior angles. So that's why this angle and this angle are equal. Angle PAPB and angle PBQ. Both are equal because of alternate interior angles. Okay, also we know that PB common, PB is equal to PB common. The third condition is, as you know that PQ is parallel to AB, PQ is parallel to AB and PB is transversal line, so therefore this angle is equal to this angle because when two parallel lines cut by a transversal line, then this angle is equal to this angle. So
angle BPQ is equal to the angle ABP. Okay, alternate interior angles. So by using angle side angle, triangle PAB is congruent to triangle BQP. तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे हम सीधा कंडीशन भी लगा सकते हैं। हमने पहले की है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप ये सीधा कंडीशन भी लगा सकते हो या प्रूव करके भी दिखा सकते हो। But we also write the condition that diagonal PB divides the parallelogram ABQP into two congruent triangles. So that's why this triangle is congruent to this triangle. And we know that if two triangles are congruent, then their areas are also equal. So area of triangle PAB is equal to the area of triangle BQP. Okay, so also from this we can write that area of triangle PAB is half of the area of पैरेललोग्राम ABQP, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा, तो हम ट्रायंगल इसके एरिया को क्या लिख सकते हैं, पूरे का हाफ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ABQP. Okay, so area of triangle PAB is equal to the half of area ABCD. Why? Because area of triangle ABCD is equal to area of parallelogram ABCD is equal to the area of parallelogram ABQP. तो अब हम area of ABQP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ABCD। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। क्लियर?